हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन लो लेवल सिस्टम डिजाइन सीरीज। अभी तक इस सीरीज में हमने कवर किया है सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड देन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिजाइन पैटर्न्स लाइक स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल एज वेल एज क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न्स। एंड अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसको अप्लाई करना, उसको इंप्लीमेंट करना इन अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So we would be solving one LLD problem, one machine coding problem in today's video, and that is on ride sharing application. तो आज के वीडियो में हम पूरा प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, फिर उसकी ब्लूप्रिंट क्रिएट करेंगे एंड देन एंड में कोड लिखेंगे. बिकॉज ब्लूप्रिंट क्रिएट करना एंड कौन कौन से क्लासेस बनेंगे एंड हम कैसे डिजाइन करेंगे पूरा सॉल्यूशन को, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ हमने सॉल्यूशन डिजाइन कर लिया फिर तो कोड लिखना काफी आसान हो जाएगा. सो गाइस, स्टिक टिल द एंड एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेस डिस्कशन. तो पहले तो समझते हैं व्हाट इज राइड शेयरिंग एप्लीकेशन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कैब बुकिंग एप्लीकेशन. सो या देयर आर मल्टीपल कैब बुकिंग एप्लीकेशन लाइक उबर एंड ओला विच आर वेरी फेमस, जो आपने कभी ना कभी यूज किया ही होगा. सो कैब बुकिंग एप्लीकेशन के अंदर यूजर अपना इनपुट डालता है. लेट्स से ये उसका सोर्स लोकेशन है, दिस इज द डेस्टिनेशन लोकेशन, एंड उसके बेसिस पे फिर ड्राइवर उसको असाइन होता है. सो इट वर्क्स फ्रॉम यूजर टू ड्राइवर. लाइक यूजर ने अपना इनपुट दिया एंड उस इनपुट को किसी ड्राइवर ने एक्सेप्ट किया एंड देन दैट इज हाउ द राइड इज क्रिएटेड इन कैब बुकिंग एप्लीकेशन. But in ride sharing application, it works the another way. Ride sharing application के अंदर user would be as a driver also as well as passenger also. So जब कोई user एक ride offer करता है from a location A to a location B, that means he is working as a type of driver. But let's say same user select करता है one of the offered ride, then the user will act as a passenger. So मान लीजिए आप जा रहे हो from Bangalore to Mumbai via your car. आप अपनी प्राइवेट कार से जा रहे हो एंड यू आर अलोन इन योर कार. सो यू थॉट दैट यू विल ऑफर दिस राइड टू समवन एल्स हु आल्सो वांट टू ट्रैवल फ्रॉम बेंगलोर टू मुंबई ऑन द सेम डेट. तो आप दोनों साथ में मिलके जा सकते हो. दिस इज हाउ राइड शेयरिंग एप्लीकेशन वर्क. आपने पहले राइड ऑफर की एंड लेट्स से इफ देयर इज समवन हु आल्सो वांट्स the similar requirement to travel from Bangalore to Mumbai on the same date, and he might choose to share a ride with you. So this is how ride sharing application works, and in this way it is different from cab booking application. तो अभी समझते हैं इस पूरे प्रॉब्लम को डिटेल में with what all the functional requirements we have to implement for this problem. तो जैसा कि मैंने बताया, ride sharing application will allow user to share rides on a route. So उस रूट के लिए पहले तो वो ऑफर करेगा राइड एंड देन देयर वुड बी वन यूजर जो उस राइड को सिलेक्ट करेगा. फर्दर यूजर कैन बी आइदर अ ड्राइवर और अ पैसेंजर. सो इफ यूजर इज ऑफरिंग अ राइड, दैट मीन्स ही इज अ ड्राइवर. इफ द यूजर इज शेयरिंग अ राइड, देन द यूजर इज एक्टिंग एज अ पैसेंजर. Further, there would be some ride selection strategy based on which the ride would be assigned. तो इसकी ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं. तो एप्लीकेशन शुड अलाउ यूजर टू ऑनबोर्ड. सो यूजर ऑनबोर्डिंग की फंक्शनलिटी होनी चाहिए, यूजर डिटेल्स की फंक्शनलिटी टू ऐड द यूजर डिटेल्स एंड देन टू ऐड द व्हीकल डिटेल्स फॉर दैट पर्टिकुलर यूजर. Then we should be able to offer the ride with the route details like starting location, ending location, vehicle and available seat. Further, there are different strategy on the basis of which the ride is offered to the user. So one strategy is vehicle type and second is most vacant. So let's say इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. आपको कोई एक लोकेशन A से लोकेशन B तक जाना है एंड देयर आर मल्टीपल वेज बाय व्हिच यू कैन ट्रैवल. यू कैन आइदर टेक अ बाइक और अ कार और एन ऑटो. तो आप कौन सा चूज करोगे इनमें से? सो दिस विल डिपेंड ऑन द व्हीकल टाइप. सो इफ अ यूजर हैज सिलेक्टेड द व्हीकल टाइप स्ट्रेटजी, देन इन दैट केस यूजर एक अपना प्रेफरेंस व्हीकल टाइप देगा एंड उस व्हीकल टाइप की राइड उसे असाइन होगी. सो दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज मोस्ट वेकेंट. So if a user want to travel from a location A to location B and there are let's say multiple rides in these two locations at a given time, then if the user select most vacant strategy, तो जिस भी ride में maximum available seats होगी, that ride would be assigned to that user. So these two strategy we have to apply in our code and we have to provide these two features while a user is selecting a ride. Further, system should be able to end the ride end का ऑप्शन आना चाहिए एंड यूजर कैन ओनली ऑफर अ राइड फॉर अ गिवन व्हीकल इफ देयर आर नो एक्टिव ऑफर राइड फॉर गिवन व्हीकल टाइप. सो ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट हो गई एंड देन फाइनली हमें प्रिंट करना होगा हाउ मेनी राइड्स आर ऑफर्ड एंड टेकन बाय ऑल द यूजर्स. सो यहाँ पे एक बोनस क्वेश्चन भी है. लेट्स से आपको जाना है बैंगलोर टू मुंबई एंड देयर इज नो डायरेक्ट राइड अवेलेबल, बट देयर इज अ ride with an intermediate stop in Goa. So that is a ride from Bangalore to Goa and then Goa to Mumbai. Then your application should be able to offer this ride to the user as well. So this is like an optional or a bonus question. It is not mandatory to be implemented, but yeah, I wish that you implement this by yourself after we go through the basic requirement, after we code the basic requirement. Now further, these are the other necessary notes.
कि you should be implementing a driver class, you should use the in-memory data structure, no UI is needed, you have to prioritize compilation, execution and completion of your code, and then further you should work on expected output first, and then like add the go to have features of your own, like a bonus question or any other features which you require. But पहले जितना कुछ बताया है that is mandatory to be completed, and these are your expectation from you. So code working होना चाहिए, demonstrable code होना चाहिए, and the functionality should be correct. Further, you should use proper abstraction, modeling, separation of logic, and then your code should be modular, readable, as well as unit testable. You should apply the necessary design patterns and also follow the solid principles. And your code should easily accommodate a new requirement with minimal changes, right? This is also very important. The code should be extensible for a new requirement but close to modification. This is one of the solid principle that you have to apply in your code. And the last thing is you should do proper exception handling if required. So these are the basic requirements. First we have, then we have a bonus question, and then there are some notes which you have to keep in mind while actually coding the solution. But before we jump onto the coding part, as I said, we will first discuss the blueprint of this solution and we will design the solution first. So यहाँ पे मैंने एक blueprint open करा है जिससे हमने आज तक और 2 या 3 LLD problem solve किए हैं. The same blueprint will apply in all the given machine coding round or any LLD problem. आप इसको हर बार हर जगह पे यूज कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इससे. तो आज भी सेम ब्लूप्रिंट से आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एंड लेट्स सी हाउ दिस ब्लूप्रिंट विल वर्क. तो सबसे पहले स्टेप 1 आएगा कि आप लिस्ट डाउन करोगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, लाइक व्हाट आर द एक्शन, फीचर्स एंड फ्लोज. तो यहाँ पे मैं एक्शंस की बात करूँ, देन देयर आर एक्शंस लाइक यू शुड बी एबल टू क्रिएट द यूजर, you should be able to add the vehicle for that user, then offer a ride is another action, then there would be an action to select a ride, and there would be an action to end the ride. So these are the different kind of action or functionality that your application should provide. So ये सब चीज़ें हो गई. तो I have listed down the same thing like offer ride, select ride, end ride, print steps, जो ये last functionality थी, and then we should be able to add the user, get the user, add vehicle, get vehicle. So यहाँ से हमने आइडिया आ गया कि कौन कौन से मेथड्स या फंक्शनलिटी हमें अपने कोड में इम्प्लीमेंट करनी है. द नेक्स्ट स्टेप इज वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द कोर एंटिटीज. तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से नाउन्स है और जिसके करस्पॉन्डिंग क्लासेस बनेंगे हमारे कोड में. सो दिस आर लाइक यूजर, vehicle. Vehicle के अंदर there are 3 different vehicle types like car, auto and bike which we would implement, and then there is one class that would be of ride. And yeah, so we also have like origin and destination. So these are what? These are just a location. So हम location के लिए एक separate class बना सकते हैं यहाँ पे. So these are the different classes that we would be implementing in this code. Further the next step is यहाँ पे हम define करेंगे attributes को and classes की responsibilities को. So vehicle class के अंदर होगा registration number, vehicle type, user and model, because a vehicle is associated to one of the user. Further user के अंदर होगा user ID, user name, and then rides offered, rides taken, and the list of vehicles owned by the user as well as gender. Ride के अंदर भी सेम चीज़ होगी. There would be a starting location, there would be destination location, and there would be a vehicle associated with that ride, a driver associated with that ride, as well as a user would be associated with the ride जिसने वो ride actual में use की है, consume की है. So and then there are additional things like available seats and ride status की ride in progress में है या फिर scheduled है या फिर completed है. And then we have location जिसके अंदर latitude, longitude and address होगा. So this is the initial draft of classes that we have now, and इसी same draft के corresponding हम classes बनाएंगे in our code. Further हम relationship को identify करेंगे. So composition means has a relationship. Ride has a vehicle and a driver, and then user has a vehicle. Further inheritance is like is a relationship जिसमें hierarchy होती है between a parent class and a child class. So vehicle can act as an abstract class here, whereas bike, car and auto will act as a inheritance relationship which would be acting as a subclass of class vehicle. Further there is an association relationship, like ride is associated to a list of users, there are riders. So whenever there is a tight coupling between two things, that is where you define that as a composition. But whenever there is a loose coupling, let's say a ride can have a passengers or it may not have, let's say वो ride किसी ने नहीं ली, so there can be empty riders object as well. So there is a loose coupling, hence I define this into a association relationship. Further हम enums and constants को use करेंगे. There are different enums like vehicle type के लिए bike, car and auto, and there are
different enums for gender as well which you can define, as well as let's say right status के लिए भी आप enum define कर सकते हो कि in progress में है या scheduled है या completed है. Further, you will design the service classes like user service as well as right service. User service से आप users create कर सकते होने चाहिए and you will perform user operation. Right service से आप rights के operation perform करोगे like select a right, offer a right और end the right. So these two services you would be implementing in your code. Further, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया है कि you have to use in-memory data store, so we would be using hash map and a list that are provided by Java. Now comes the important part कि हमें स्टेप 8 में एल्गोरिदम्स एंड डिज़ाइन पैटर्न्स डिफाइन करने हैं. सो यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न्स कौन कौन से होंगे. सो एक चीज़ का तो आइडिया आ जाना चाहिए दैट वी शुड बी यूजिंग फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न हियर. जब भी आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, लेट्स से कार, बाइक एंड ऑटो एंड ऑल थ्री आर अ टाइप ऑफ व्हीकल, then you should be implementing factory design pattern for a vehicle factory such that you concentrate the logic of creation of a vehicle at one places, ताकि कोड क्लीन रहे एंड एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक रहेगा. ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड इंप्लीमेंट दिस फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न स्पेसिफिकली व्हाइल क्रिएटिंग डिफरेंट व्हीकल्स. फर्दर मैंने यूजर फैक्ट्री भी यहाँ पे मेंशन करा है. इट इज गुड टू हैव. लेट्स से टुमारो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स लाइक नॉर्मल यूजर्स एज वेल एज प्रीमियम यूजर्स जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके रखा हो. इन दैट केस इफ यू हैव अ यूजर फैक्ट्री देन इट वुड बी इजी टू क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स बाय दिस फैक्ट्री. And third thing is right selection strategy. So here we would be implementing a behavioral design pattern, that is strategy design pattern, because यहाँ पे यूजर रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी स्ट्रेटेजी से राइड लेनी है, कौन सी स्ट्रेटेजी से राइड सिलेक्ट करनी है. सो द स्ट्रेटेजी कैन बी व्हीकल टाइप और मोस्ट वीकेंड. एंड ये फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वी वुड बी इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न विच इज अ काइंड ऑफ बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न, जिससे आप रन टाइम पे डायनेमिकली कोई स्ट्रेटेजी चूज कर सकते हो. सो वेन एवर यू हैव अ गोल, लेट्स से टू गो फ्रॉम place A to place B, but you have multiple options, multiple choices, and you want to select one of the choice based on the strategy. The strategy can be vehicle type or most vacant. So you will choose one of the strategy and then you will select a ride based on the strategy. So to implement this, we would be applying the strategy design pattern, which is a kind of behavioral design pattern. जहाँ run time पे आप behavior decide करोगे of your code. Hence, we are applying strategy design pattern here, and that would be nothing but right selection strategy. Further, we have to handle the edge cases, exceptions, and validations here. Okay, so one more thing we left here, business rules. यहाँ पे एक business rule जो मुझे दिखा था कि user can only offer a ride once there are no active ride for the given vehicle type. So एक business rule हमें रखना है. उस business rule के corresponding there would be an exception, and there are like invalid inputs जो हम handle करेंगे code में. Right, and the last thing is we have to write the actual code जहाँ हम start करेंगे abstract classes and enum से, and then we would be implementing all the different codes, and last में हम services define करेंगे. So I hope you guys understood कि हमने कैसे पूरा blueprint को use करके इस solution design किया है. हमने classes को identify किया, हमने function requirements को identify किया, as well as हमने identify किया कि classes के बीच में कैसे relationship है, and then end में decide किया कि कौन कौन से design patterns इसमें apply होंगे. So once you are reached to the solution, अब तो कोड लिखना काफ़ी आसान है. So yeah guys, that's all for today's video. आज के वीडियो को मैं रेस्ट्रिक्ट रखना चाहता हूँ ऑन प्रॉब्लम डिस्कशन एज वेल एज ब्लूप्रिंट डिस्कशन, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम उसका कोड को अच्छे से देखेंगे. तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट, एल्स यू वुड मिस द नेक्स्ट वीडियो. सो yeah guys, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.